So in this assignment, you have the first question that Rima took 5 ml lead nitrate in a beaker and added approximately 4 ml potassium iodide solution to it. What would she observe? So, when you mix these two compounds, one is lead nitrate, lead is Pb2 positive, nitrate ion is NO3 minus 1. So if you cross this, you get PbNO3 twice. Potassium is K positive and iodide ion is I negative. So you add this, double displacement reaction will take place. Potassium being more reactive will displace lead from lead nitrate, and this gives potassium nitrate plus lead iodide. ठीक है? And this lead iodide has this makes precipitate which is yellow in color. So you'll get yellow precipitate. So for the first question, B option is the correct answer, that yellow precipitate will be formed. So take out your copy and write the reaction. It may be in the form of MCQ, but you should know what reaction is happening. जहां पर प्रेसिपिटेट बनते हैं ऐसे आप डाउनवर्ड एरो लगा के उसको प्रेजेंट कर सकते हो एंड दिस tells that precipitates insoluble mass. ठीक है, insoluble सा mass आपको मिलता है टेस्ट ट्यूब में, तो जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, मतलब सॉलिड कंपाउंड वो बन जाएगा. और ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन अगर इस तरह से पूछ ले तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पोटेशियम
लेड को और यहाँ पर आयोडीन की जगह नाइट्रेट आयन ये आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ में प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें ये भी पूछ सकते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग। अब आपको पिक्चर बनी है जिसमें के पास है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें आपने जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड Zn प्लस H2SO4, ये जिंक ग्रेन्यूल्स है। टेस्ट ट्यूब के बॉटम में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पीसेस जिंक के। ठीक है, इसमें आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हो, रिएक्शन होगा। Zinc is more reactive than hydrogen, so it can displace hydrogen from acid and it forms zinc sulfate, and this hydrogen gas is liberated. ठीक है, जो साथ में आपको पॉप साउंड के साथ दिखा रहे हैं, बर्निंग ऑफ अ गैस विद पॉप साउंड और स्पार्क से दिखाई है, वो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, so A gas is hydrogen. Option B is the correct answer. साथ साथ में रिएक्शन लिखते रहो, असाइनमेंट के ऊपर ही लिख लो, आपको पता चले क्या हो रहा है। सिर्फ ऑप्शन करेक्ट होना is not the only thing we need. You should know the concept also. Okay, then third question. Which of the following correctly represents the balanced chemical equation? We have 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। आपको LHS और RHS दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर करने हैं। 3 आयरन on both the sides, 8 hydrogen atoms on both the sides, and 4 oxygen atoms on both the sides. So this is a correctly balanced equation. आपको बस LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल देखना है। Next question is, in the reaction of iron with copper sulfate solution, you have copper sulfate and you react this with iron, you get copper plus ferrous sulfate. Which option in the given table correctly represents the substance oxidized and the reducing agent? Check karo and give me the option. Do it yourself now.
Hanji, who will give me the answer? Raise your hands if you can do this. Bolo beta. Nobody? Ninth G, who's coming to give me the answer? Ninth G. Yes, ninth D में से a student is raising hands. Yeah, please. Please come, beta. Yes. Oxidized, and which substance? What is the reducing agent? Reducing agent. What is getting oxidized here? Iron. Iron. And what is the reducing agent? Iron. आयरन. ओके, वेरी गुड. चलो बैठो. तो यहाँ पर क्या है? आयरन. मैंने आपको कहा था आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में भी पता होना चाहिए. आयरन हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है. कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में है, अकेला एटम है, तो उसके ऊपर जीरो चार्ज होगा. बट व्हेन इट कंबाइंस विद any iron, इस केस में it has +2 charge and sulfate ion has -2 charge. ठीक है. So Fe से Fe2 positive बनने के लिए it has to lose electron. Loss of electron is a process of oxidation. ठीक है. तो iron is getting oxidized. और अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, जैसे यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी वो 2 पॉजिटिव चार्ज आया. तो इसके लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, जो इसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हो रही है. यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. ठीक है. तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन के टाइम पे दिस आयरन is losing 2 electrons and becoming Fe2 positive. This is loss of electron. और इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए, that is used for the process of reduction, जिसमें ये कॉपर 2 पॉजिटिव का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट करके इट इज कन्वर्टिंग टू कॉपर. दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज नोन एज रिडक्शन. ठीक है. तो ये प्रोसेस इसमें चल रही है. ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं. इसमें कहता है कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किसी को गेन भी करने पड़ेंगे. तो वी कॉल इट रिडॉक्स कपल. इट ऑलवेज occur in a couple. If any element is losing electrons, another element has to accept the electrons which are lost by the element, right? So they always occur together and we call it redox couple, right? So जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जैसे इसमें आयरन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये कॉपर को हेल्प कर रहा है रिड्यूस होने में. तो आयरन क्या हुआ? इट इज ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ, राइट? इट इज ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ बट रिड्यूसिंग कॉपर. ठीक है. खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कॉपर को रिड्यूस कर रहा है. तो बिकॉज इट इज हेल्पिंग कॉपर टू गेट रिड्यूस्ड, this iron is known as reducing agent. ठीक है. और अगर यही बात हम यहाँ कॉपर के लिए बात करें तो कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड. अब कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो हम कॉपर के लिए बोल सकते हैं दैट कॉपर इज getting reduced and helping iron
iron to get oxidized. Therefore हम क्या बोलेंगे कि कॉपर क्या है, वो आयरन को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए जो कॉपर है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया इसमें, कि एक एजेंट, एक हेल्प, एक फ्रेंड, ठीक है, जो कि हेल्प कर रहा है आयरन को कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए और उसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो ये एक दूसरे के फ्रेंड हैं। एक एक जो है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, राइट इट डाउन बेटा। डन। चलो फिर नेक्स्ट इज solid calcium oxide reacts vigorously with water to form. This is solid calcium oxide. This reacts vigorously with the water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. ठीक है, इसके साथ बहुत सारी हीट रिलीज होती है। हीट के लिए डेल्टा साइन भी हम यूज कर लेते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइन। इस प्रोसेस को हम स्लेकिंग ऑफ लाइन की बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड dissolves in water to form its solution called lime water. Calcium hydroxide So calcium hydroxide reacts with water and this gives you, what do you say? Water dissolves in water to form solution. Water to form solution called lime water. This gives you lime water. Which among the following is true about the slaking of lime and the solution formed? ठीक है. So first option says that it is an एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक होता है जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है, पर यहां पर हीट रिलीज हुई है, तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, द pH of the resulting solution will be more than 7. ओके, ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो एक बेस होता है। ठीक है, और बेस जो है, मेटल के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, कैल्शियम एक मेटल है, तो मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है, और इनकी जो बेस की पीएच है वो 7 to 14 के बीच में पीएच स्केल होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कौन कितना एसिडिक, कौन कितना बेसिक है। तो इसकी जो पीएच होती है वो 7 to 14 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये हो गया that it is an exothermic reaction or
the pH of the resulting solution will be more than 7. और इस मतलब आपके पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है. Fourth option is the pH of the resulting solution will be less than 7. No, fourth option is incorrect. So first option is also incorrect and fourth is also incorrect. So your answer is B option. ठीक है. चलो, next is barium chloride. Barium chloride is BaCl2. On reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate plus ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of reaction involved? देखो जरा क्या ऑप्शन बन रही है, मैं पूछूंगी आपसे. हाँ जी, 9th ए में से कौन बता रहे मुझे आंसर? 9th ए. नोबडी. आपको बताना है इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है या प्रेसिपिटेशन हो रही है, कॉम्बिनेशन हो रही है या डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, या जो ऑप्शन में आपके पास कॉम्बिनेशन में दो ऑप्शंस दिए हैं वो हो. बोलो. नोबडी. 9th ए. 9th सी में से कोई? This is not good. 9th डी. हाँ जी, प्लीज कम. हाँ जी बेटा. What is the correct option? It is a double displacement and precipitate reaction. Option 4. That is D, 2 and 4, right? Yes. Okay बेटा, बैठो. गुड. चलो, अभी देखो यहाँ पर ये बेरियम क्लोराइड है और अमोनियम सल्फेट है, तो हो क्या रहा है? बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन कर रहे हैं और अमोनियम क्लोराइड के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो दोनों आयंस डिस्प्लेस हो रही हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दोनों आयन एक्सचेंज हो रही है. सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक आयनिक सॉल्यूशन होता है, दूसरा मेटल होता है, इसमें दोनों आयंस डिस्प्लेस हो रही है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है. और मोर ओवर ये जो बेरियम सल्फेट है, इसका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है. आपको ये रिएक्शंस याद करनी, ये चीजें जो भी हो रही है लिखो, मैं कह रही हूँ रिएक्शन लिखो, मैं तभी रिएक्शन नेम टाइप सब कुछ बता रही हूँ बार बार, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं, क्योंकि आपने देखी नहीं हुई, तो जो मैं बता रही हूँ उसको सुनो और याद रखो. ठीक है, यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं फिर. ठीक है, तो बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं.
तो इसमें ये दो तरह का हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें ये दोनों ऑप्शन इकट्ठे डी में दिए हैं, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। Electrolysis of water is a decomposition reaction. Is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases, आपको बतानी है रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन gases liberated during electrolysis of water. Electrolysis of water. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है कि वाटर में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे एंड इट विल गिव H2 and I2. H2 and O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का हम रिएक्शन लिख लेते हैं बैलेंस्ड, और फिर हम देखेंगे कि उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसकी क्या रेशियो इसमें मिलती है। मैं आपको डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा बताती हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सब अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे।
आप ये ड्रॉ कर लो, फिर हम नेक्स्ट उसमें इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे. दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. Draw it. ठीक है बेटा, ये पूरा ड्रॉ करना है आपने, फिर इसको हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, यहाँ से ही इसी क्वेश्चन से.